पैर को रखना रख ही दो नहीं पीछे वाली जो सीट है ना वो सही नहीं है पीछे Kirpal dalawage
दे जा तू दर्श हुन लाया कमंदेरिया दे जा तू दर्श हुन लाया कमंदेरिया धर तेरे ते आवांगे जिना रशा कृपाल धलावांगे जिना रशा कृपाल धलावांगे. Well, tonight Sanji is not going to give a talk. Instead, we are going to sing the bhajans. So first, we will sing two of the new bhajans, and if you have the chorus or if you can sing the chorus, please join us. And maybe towards the end, Sanji will say a few words. After we sing the bhajans, then the other dear ones from the Sangat can sing the bhajans too. Ce soir, Sanji ne va pas donner de discours, on va simplement chanter des bhajans. D'abord, Papou et Gourmel vont chanter deux nouveaux bhajans, et si ceux qui connaissent le refrain peuvent chanter avec eux. Et ensuite, on chantera les bhajans après eux. Hoy el maestro no hará un discurso, vamos a cantar bhajanes. Papou y Gourmel van a cantar unos bhajanes nuevos. Aquellos que sepan el coro pueden cantarlo y después los demás podrán cantar bhajanes. Oggi il maestro non farà un discorso. Oggi il maestro non farà un discorso, ci canteremo bhajani. Prima Gourmel e Papou canteranno due bhajani nuovi. Quelli che sanno le parole possono cantare con loro e dopo tutti possono cantare. नाम की महिमा अपरंपार जावा सतगुरु के बलिहार. नाम की महिमा अपरंपार जावा सतगुरु के बलिहार. पलक झपकते कट जाते हैं उसके कष्ट कलेश. जिसके मन मंदिर में रहते सतगुरु जी हमेश. पलक झपकते कट जाते हैं उसके कष्ट कलेश. जिसके मन मंदिर में रहते सतगुरु जी हमेश. और नाम से बड़ा नहीं है कोई भी आधार. नाम की महिमा अपरंपार जावा सतगुरु के बलिहार. नाम की महिमा अपरंपार जावा सतगुरु के बलिहार. नाम जपा कबीर नानक ने जग में किया उजाला. लेकर प्रभु का नाम पी गई मीरा जहर प्याला. नाम जपा कबीर नानक ने जग में किया उजाला. लेकर प्रभु का नाम पी गई मीरा जहर प्याला. नित नियम से करो नाम से जीवन का श्रृंगार. नाम की महिमा अपरंपार जावा सतगुरु के बलिहार. नाम की महिमा अपरंपार
जावा सतगुरु के बलिहार। प्रभु से बेमुख रहा जो कोई, उसने जन्म गंवाया, उसका जीवन सफल हो गया, जिसने नाम ते आया। प्रभु से बेमुख रहा जो कोई, उसने जन्म गंवाया, उसका जीवन सफल हो गया, जिसने नाम ते आया। जो भी चढ़ा नाम की नया, उतर गया भव पार। नाम की महिमा अपरंपार, जावा सतगुरु के बलिहार। नाम की महिमा अपरंपार, जावा सतगुरु के बलिहार। नाम की महिमा नाम ही जाने, जान जिस नाम ते आया। अजायब कृपाल के चरनी लग के, कोटि कोट यश गाया। नाम की महिमा नाम ही जाने, जान जिस नाम ते आया। अजायब कृपाल के चरनी लग के, कोटि कोट यश गाया। जो भी द्वारे आया गुर के, उसका बेड़ा पार। नाम की महिमा अपरंपार, जावा सतगुरु के बलिहार। नाम की महिमा अपरंपार, जावा सतगुरु के बलिहार। गुरु कृपाल मेरे घरे आना, गुरु कृपाल मेरे घरे आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घरे आना, गुरु कृपाल मेरे घरे आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। एक बार भी सच्चे मन से जिसने तुझे ध्याया, भर भर झोली दोनों हाथों तुमने प्यार लुटाया। एक बार भी सच्चे मन से जिसने तुझे ध्याया, भर भर झोली दोनों हाथों तुमने प्यार लुटाया। मेरी डोर तुम्हारे हाथों, तुम मेरे जीवन साथी, तुम मेरे जीवन साथी। तुम भक्तों के भक्त तुम्हारे, ठीक नहीं मुझको ठुकराना, ठीक
ठीक नहीं मुझको ठुकराना, मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घर आना, गुरु कृपाल मेरे घर आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। शिवरी के झूठे बेरों से प्यारे तुमने मजा उठाया, दुर्योधन के मेवे तज के साग विदुर का खाया। शिवरी के झूठे बेरों से प्यारे तुमने मजा उठाया, दुर्योधन के मेवे तज के साग विदुर का खाया। केवल दास नहीं हूँ सतगुरु, मैं दासों का दास तुम्हारे, मैं दासों का दास तुम्हारे। जैसे सबकी लाज रखी है, मेरी भी लाज रखाना, मेरी भी लाज रखाना। मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घर आना, गुरु कृपाल मेरे घर आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। कैसे तुम्हें बुलाऊं सतगुरु, पता नहीं है ज्ञान नहीं। किसी तरह का कोई तुकबर, मेरे बस की बात नहीं। कैसे तुम्हें बुलाऊं सतगुरु, पता नहीं है ज्ञान नहीं। किसी तरह का कोई तुकबर, मेरे बस की बात नहीं। पल पल के दर्शन को गुरुजी, प्यासी आंखें तरस रही हैं, प्यासी आंखें तरस रही हैं। यही बेनती है अजायब की, मुझे नहीं तड़पाना, मुझे नहीं तड़पाना। मैं तेरा दीवाना। गुरु कृपाल मेरे घर आना, गुरु कृपाल मेरे घर आना। जैसे तुम सावन दीवाने, मैं तेरा दीवाना, मैं तेरा दीवाना। Okay, now you may sing the bhajans. तेरा
Sach Khand Jat
दाता जी दार्शनिकाय कृपाल जिया के अजायब उतारो अमृत पिया के
Semana
ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ I am very thankful to my beloved Lord Almighty Kirpal and Savan who have given us this opportunity to sing their praises. Je suis très reconnaissant à mon bien-aimé Seigneur Sawan et Kirpal qui nous a donné cette occasion de chanter leur dévotion. Sono molto grato al mio amato Signore Sawan e Kirpal che ci hanno dato questa opportunità di cantare le loro lodi. Estoy muy agradecido con nuestro Señor, el Todopoderoso Sawan Kirpal, quienes nos han dado la oportunidad de cantar sus alabanzas. ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਸ ਸੰਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬੰਬੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ 8 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ As you all know that people knowing so many different languages have gathered here, and if we will translate the satsang in all the languages which people understand over here, it will not create a loving atmosphere for the satsang. Comme vous le savez, des gens de toutes sortes de langages sont rassemblés ici. Et si nous voulons traduire le satsang dans tous ces langages, cela ne créera pas une atmosphère aimante pour les gens qui sont ici. Come voi tutti sapete, qui si sono riunite le persone che parlano così tante diverse lingue e se noi traduciamo il satsang in tutte queste diverse lingue, questo impedirà un'atmosfera amorevole dal crearsi. Como ustedes saben, aquí se han reunido personas de numerosas lenguas. Si tradujésemos el satsang en todas esas lenguas, esto no conduciría a que aquí hubiese una atmósfera de amor. Dear ones who have been to Bombay know that over there people of 8 different languages get together there, but the satsang is done only in one language, Punjabi. Parmi vous, ceux qui sont allés à Bombay savent qu'il y a des personnes parlant 8 langues différentes à Bombay, mais le satsang est fait en une langue seulement et n'est pas traduit. I cari che sono stati a Bombay sanno che lì si riuniscono i discepoli che parlano anche fino a 8 diverse lingue, bensì il satsang fatto la sera viene pronunciato solamente in Punjabi. Las personas que han estado en Bombay se han dado cuenta que allá visitan personas que hablan 8 lenguajes diferentes. Sin embargo, el satsang es traducido en una sola lengua, al Punjab. And still the hunger of the dear souls is satisfied by the giver. Et malgré cela, la faim des personnes qui sont là est satisfaite. E tuttavia la brama di quelle care anime viene soddisfatta anche senza la traduzione. Y aún así, la añoranza de cada alma es satisfecha. ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ After the satsang is over, the group in Bombay, after the satsang is over, the group leaders take their own groups and they translate or make their dear ones understand in their language. À Bombay, une fois que le satsang est terminé, ceux qui s'occupent des groupes rassemblent les gens et traduisent le satsang pour eux. ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹਾਂ A Bombay, dopo che il satsang
è finito, i capigruppo dei vari gruppi prendono i cari e traducono e gli fanno capire ciò che è stato detto nel satsang. En Bombay, cada líder de grupo, después del satsang, se reúne con su grupo y les traduce lo que fue dicho antes en las distintas lenguas. ਹਾਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ 2 ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਲੀਡਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿਆ ਕਰ। So here the satsang will be done in these 2 languages. It will be translated into English only, and afterwards the group leaders can take their groups and translate for them in their language. Aussi, si le satsang sera fait en 2 langages, en punjabi, en anglais, et ensuite les responsables de groupe pourront traduire le satsang une fois que le satsang sera terminé. E così anche qui, come a Bombay, il satsang verrà fatto solamente in 2 lingue, cioè verrà tradotto solamente in inglese, e dopo che è finito i capigruppo prenderanno i loro gruppi e tradurranno il tutto. Aquí, al igual que en Bombay, el satsang será traducido solamente en 2 lenguas, en el punjabi y en el inglés, y después cada líder de grupo traducirá a su respectivo grupo, después del satsang. ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਐਸੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਤਮਾ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। Those who have been to the groups to India, they may remember that many a times this thing happens, that when we ask people if they have any questions, they say that no, just let us sit here quiet and have your darshan. We do not have any questions for you. Et souvent dans les groupes, on a vu que des gens qui, on leur demandait s'ils avaient des questions et ils disaient non, nous voulons simplement être là et avoir votre darshan et nous n'avons pas de questions. Quelli che sono stati nei gruppi in India hanno visto che spesse volte quando viene chiesto bene ora fate le vostre domande, la risposta è stata no, noi non abbiamo alcuna domanda, vogliamo semplicemente sederci qua ed avere il tuo darshan. Aquellos que han estado en India han podido presenciar las sesiones de preguntas y respuestas o que si les requieren alguna pregunta dicen no, no tenemos ninguna pregunta que hacer, tan solo queremos sentarnos aquí y recibir el darshan. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਅੱਖ ਉਹਦਾ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤ ਦਾ ਨੂਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। Kabir Sahib had said that the thing which is worth watching is the forehead and the eyes of the master, because the truth always, the glory of the truth, the light of the truth always accompanies the master. Those who are able to still their mind and attention, they understand everything and they get the real bliss. Kabir Sahib a dit ce qui est digne d'être regardé, d'être observé, c'est le front et les yeux du maître, parce que je suis pas sûre. Kabir Sahib said that the thing which is worth watching is the forehead and the eyes of the saint, the master, because the truth, the light and the glory of the truth always accompanies him. Parce que la lumière et la gloire de la vérité toujours les accompagnent. And those who are able to still their mind and attention, they get the real bliss. Et ceux qui sont capables d'apaiser leur mental, de calmer leur mental, obtiennent la véritable félicité, la véritable grâce. Kabir Sahib aveva detto che quella cosa che è degna di essere osservata è la fronte e gli occhi del Maestro, perché in queste cose giacciono la luce e la gloria della verità, e coloro che sono in grado di placare la loro mente, essi ottengono la vera beatitudine. Kabir Sahib dice que debemos mirar a los ojos y a la frente del Maestro, porque allí yace la verdadera luz y la verdad.
Aquellos que pueden aquietar la mente pueden recibir la gracia. साधु का निरख आँख और माथा सत का नूर रहे तिन साथा. The vision of the sadhu should be done, or the darshan of the sadhu should be done looking into his eyes and the forehead, because the glory of the truth always accompanies him. Le darshan du sadhu devrait être obtenu en regardant son front et ses yeux, parce que la gloire de la vérité vient toujours de là. Il darshan del sadhu andrebbe fatto osservando sempre gli occhi e la fronte del maestro, perché la gloria della verità accompagna sempre il sadhu. La gracia del sadhu se debe apreciar observando los ojos y la frente, porque allí siempre yace la verdad. गुरु नानक ने भी कहा है, चाकी होए भावना जैसी, हर मूर्त देखी तिन तैसी. जैसे जैसे ऐसी ख्याल बना के बैठते हैं, जैसी जैसी श्रद्धा बना के बैठते हैं, जैसा जैसा साडा बर्तन बनया हुंदा है, उसे तरह का ही, क्योंकि संतां का जो शरीर हुंदा है, स्वरूप हुंदा है, वो एक शीशा हुंदा है. अगर असी हसते देखते हैं, हसदा नज़र विच आउंदा है. अगर असी खुश होकर देखते हैं, अगर असी उदास होकर देखते हैं तो उदास नज़र विच आउंदा है. शीशे का कसूर नहीं हुंदा, कसूर सिर्फ साडा ही हुंदा है. Guru Nanak Sahib had said that one sees the image of Almighty Lord according to the feelings and emotions he has. Guru Nanak Sahib said that one sees the image of Almighty Lord according to the feelings and emotions he has. Guru Nanak a dit que l'on voit l'image de Dieu Tout-Puissant en fonction des sentiments que l'on a. Guru Nanak ha detto che uno vede l'immagine di Dio Onnipotente in accordo ai sentimenti che egli ha per lui. Guru Nanak dice que uno ve la imagen del Guru de acuerdo a los sentimientos que tenga adentro. If you look at the Master with the happiness, if you look at him with the sadness, with whatever feelings, we look at the Master, we see him like that. Si nous regardons le Maître avec joie, si nous regardons le Maître avec tristesse, quels que soient les sentiments que nous avons en regardant le Maître, nous voyons, c'est cela que nous voyons en lui. Se noi osserviamo il Maestro con felicità, se lo osserviamo con tristezza, in qualsiasi maniera noi lo guardiamo, allo stesso modo noi lo vediamo in quella maniera. De la manera como miremos al Maestro, si lo miramos con tristeza, si lo miramos con alegría, eso es lo que recibimos de él. The body of the Master is like a mirror. You know that if we look at the mirror with a smile on our face, we see ourselves smiling. If we look at the mirror with tears in our eyes, we see ourselves crying. It is not the fault of the mirror that we are smiling or crying. It is our own fault. In the same way, with whatever feelings we look at the Master, we see him accordingly. Le Maître est comme un miroir. Si nous regardons un miroir avec un sourire, nous voyons un visage souriant. Si nous le regardons avec tristesse, c'est cela que nous voyons aussi. Ce n'est pas la faute du miroir, c'est notre propre faute. Et nous voyons le Maître tel que nous ressentons. Il corpo del Maestro è come uno specchio. Voi sapete che se noi guardiamo nello specchio con un sorriso, lo vediamo che sorride. Se lo osserviamo con lacrime agli occhi, vediamo nello specchio le lacrime. Non è la colpa del Maestro, bensì il modo in quale noi lo osserviamo, così come lo guardiamo, così ci rispecchiamo in Lui. El cuerpo del Maestro es como un espejo. Si lo miramos con tristeza, si lo miramos con lágrimas en nuestros ojos, nuestro rostro reflejará eso. Si lo vemos con la alegría, eso es lo que reflejará también el espejo. No es culpa del espejo. El espejo simplemente refleja los sentimientos que yacen dentro de nosotros. Okay, you want to make the announcements about tomorrow's program? Bien. À propos de À propos des entrevues, demain matin, à partir de 9h30, il y aura des entrevues pour les Français, les Maltais et les Anglais.
Et également pour ceux qui partent plus tôt, alors les personnes devraient s'inscrire à l'attente d'informations auprès de Joe Gebhardt. There are going to be interviews tomorrow at 9:30 for people from Malta, people that speak English, as well as the French-speaking people, and those who have to leave soon. Please do register yourself immediately after this satsang in the information tent and look for Joe Gebhardt. Por favor, mañana habrá entrevistas a partir de las 9:30 para la gente que viene de Malta, para la gente de habla inglesa, para la gente de habla francesa y para aquellos che tengan che irsi temprano. Domani ci saranno interviste per le maltesi, le inglesi e anche le francesi e tutti quelli che devono partire pronto. Per piacere andare al centro di informazione alle 9:30 andate al centro di informazione dopo il satsang e inscrivite con Joe Gebhardt. Por favor, inscríbanse con Joe Gebhardt después del satsang. जो इस तरफ जगह है ना जहाँ मैं बैठा हूँ वो जगह ट्रांसलेट नहीं की।